CAT 2025 is done and now the major exam in our focus has to be ZAT 2026 guys, which is happening on 4th of January. Again a reminder for all of you, ZAT के जो registrations हैं उसकी deadline extend हो चुकी है. The last date is today 11th of December. So अगर आपने अभी तक ZAT के forms नहीं fill किए हैं so please do so because today is the last date to fill these ZAT 2026 forms, and with that we will be talking about the top 12 colleges that you should target through ZAT. So this video is going to be very crucial. We'll be talking about their average placement, we'll be talking about the fees, we'll be talking about the cutoff and the highlight of the college, why you can choose that particular college. So hello everyone and welcome to Supergrads CAT YouTube channel. My name is Neelam Balwani and now without wasting any more time, let's get started. So the very first college and of course an obvious choice has to be XLRI Jamshedpur guys. Fees 34.72 lakhs, average पैकेज जो है XLRI जमशेदपुर का 31.08 LPA है. एक्सपेक्टेड कट ऑफ ZAT का 97 परसेंटाइल जाता है. नाउ अगेन ZAT का जो कट ऑफ है फॉर XLRI differs for engineering students and non-engineering students plus male और female का जो cut off होता है वो अलग होता है. So I'll be making a separate video on that. So if you guys want me to make a video on that then simply आप XLRI cut off या सिर्फ cut off mention कर दो comment section में. मैं एक separate video उसके लिए भी बना दूंगी कि क्या expected cut off हो सकता है. Next, what is the highlight of the college? Number one, HR or BM flagship institute है with legacy placement. Now XLRI is prominently the oldest B school in the country. So ये major reason है all the people who want to pursue a career into HRM they must target this particular B school XLRI जमशेदपुर. Guys ZAT में अच्छे से मेहनत करो ताकि आप इस B school के लिए eligible हो जाओ. Next in the list is again XLRI but a different campus that is based in Delhi. Again fees इसकी भी same है 34.72 है, 31.08 LPA average CTC है. इनके placements साथ में ही होते हैं. Again expected cut off 96 percentile है. Same XLRI brand and rigor, newest state of the art campus. So the campus is actually doing, ये जो दिल्ली वाला कैंपस है ये भी काफी अच्छा कर रहा है guys. So this should be the second on the list of your target. Next in the list we have is XIM Bhubaneswar, another Xavier's institute. 24.6 lakhs जिसकी फीस है. 19.53 LPA is the average CTC. expected cut off की मैं बात करूं तो 90 से 93 परसेंटाइल के बीच में जाता है. One of the India's strongest JSUD B school with consistent ROI. तो उनका जो ROI है वो काफी consistent रहा है, placements काफी consistent रहे हैं. So again this is another B school plus इस B school में programs बहुत सारे हैं. So HRM के बारे में तो हमें पता ही है. XIM भुवनेश्वर के they have rural management, they have urban governance management, they have sustainability management, general MBA भी है. So they are offering plenty of programs. Next college in the list is IMT Ghaziabad. Fees 23 lakhs, average CTC 16.25 LPA. expected cut off ZAT का 90 से 92 परसेंटाइल के बीच में जाता है. मार्केटिंग पावर हाउस है with strong industry linked program. So yes, अगर आप करियर परस्यू करना चाहते हो मार्केटिंग में देन IMT गाजियाबाद शुड बी ऑन योर टारगेट लिस्ट. कैट का कट ऑफ गो स्लाइटली हायर बट ZAT का 90 से 92 के बीच में जाता है. सो मस्ट टारगेट दिस कॉलेज. Next we have in the list at number 5 is IMI New Delhi. Fees 21.63 lakhs, average CTC is 17.3 LPA. expected cut off 89 से 90 परसेंटाइल के बीच में जाता है, उससे स्लाइटली ऊपर जा सकता है. Then corporate backed B school है with excellent industry exposure. So you get a lot of industry exposure. Reason being Delhi में located है, connects ज़्यादा better होंगे. So that is the reason you must target this B school. Next we have is GIM Goa. Now one of the strongest reasons to target this B school is of course Goa तो एक reason है but has a beautiful campus guys. अगर मैं इसकी फीस की बात करूँ 21.45 lakhs, average CTC 15.13 LPA. expected cut off 85 से 90 के बीच में जाता है. known for analytics, sustainability programs and vibrant campus life. Another reason आपको GIM Goa target करना चाहिए because
प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शंस भी करता है। इनका अर्ली बर्ड राउंड और अचीवर्स राउंड जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, बट अगेन दैट इज वन पॉइंट अबाउट द कॉलेज। सेकेंड पॉइंट इज कि सी मैट के स्कोर्स अब नहीं ले रहा है जिम्हुआ, सो अब कैट के थ्रू, जैट के थ्रू और जी मैट के थ्रू ही टारगेट कर सकते हो। सो जैट इज अ बिग चांस दैट यू कैन टारगेट दिस पर्टिकुलर बी स्कूल ओवर हियर। Next, Tapni Manipal is in the list. Fees 20.1 lakhs. Average CTC 13.99 LPA है. Expected cutoff 80 से 85 के बीच में जाता है. One of the India's only B schools with AACSB accreditation. Again, Tapni Manipal is also doing great. Beautiful campus out there. Next we have is Maika Ahmedabad, my personal favorite college, also college for those who want to pursue a career into marketing, PR, communications. So fees 28 lakhs है, average CTC 19.22 LP, 80 to 85 percentile के बीच में कट ऑफ जाता है. India's premier institute for marketing and communication leadership. Again guys, Maika Ahmedabad के लिए अगर आप कर रहे हो अप्लाई, आपको माई कैट भी देना पड़ेगा. सो माई कैट प्लस एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम लाइक कैट, जैट, जीमैट, ये कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है फॉर माइका अहमदाबाद. नेक्स्ट KJ Somaya, fees 22.32 lakhs, average CTC is 12 LPA, cut off 85 percentile के अराउंड जाता है. One of the Mumbai's most student driven and versatile B school. Of course, मुंबई में जो भी B schools located है, they are heavily student oriented, connect ज़्यादा better होते हैं. So that is the reason you must target this college. Next, IFMR Chennai, 19.3 lakhs is the fees. Average CTC 12.04 LPA है. Expected cutoff 80 percentile. Strong in finance and quant-based specializations. If you have a strong pursue or you want to pursue a career into finance, then you must target IFMR Chennai. Next in the list is Force School of Management, again another college in Delhi. 23.24 lakhs is the fee, 16.4 LP average CTC, expected cutoff 80 percentile जाता है ZAT का. Great Delhi location advantage and again strong corporate connect भी है यहाँ पे. Last in the list we have is Liba Chennai. Again fees 18.8 lakhs है, average CTC 11.2 LPA, expected cutoff ZAT का 75 या उसके अबव जा सकता है. हाईलाइट है GSIT नो इंस्टीट्यूट इज नोन फॉर वैल्यू ड्रिवन मैनेजरियल ट्रेनिंग. सो अगेन द कॉलेज इज नोन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. अगेन लोयला हमने देखा है कि यूजी के लिए तो फेमस है ही, बट अगर आप जैट के थ्रू साउथ में कोई कॉलेज टारगेट करने का सोच रहे हो तो देन दिस इज वन सच कॉलेज दैट यू कैन टारगेट. Okay students, so that was it from my side. I hope you're out of that zone of the CAT 2025 zone and now you're all set for the other management entrance test. Again, I am reminding this thing to you again and again. We still have a chance. We have ZAT and then later you have CMAT also ahead of you. SNAP के भी अभी 2 attempts बाकी है. So make sure you're giving it your all. And if you want a solid preparation, you're missing out or you're feeling that you don't have content to prepare for these management entrance tests, then you can definitely join our Telegram channel. वहाँ पे आपको सारा material available हो जाएगा, be it PYQs, questions that you need to practice. If you want to revise any concepts, then just let us know. Because that से related Monday से भी हम एक series start कर रहे हैं, that is rapid revision series on YouTube as well. So वहाँ पे भी हम पूरा revision अच्छे से करेंगे. सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आपको फिर से पढ़ने हैं. सो यू कैन डेफिनेटली वॉच दैट सीरीज एज वेल. इट्स गोना बी एक्सट्रीमली क्रूशियल. मंडे से स्टार्ट हो जाएगी. सो मेक श्योर यू आर हियर ऑन द चैनल. अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो आप सब्सक्राइब कर दो और मेक श्योर ये इन्फॉर्मेशन आप पास ऑन कर दो सारे स्टूडेंट्स को जो जैट लिख रहे हैं. Also, make sure you do follow us on other platforms as well, like our Instagram handle, where we conduct frequent lives and there is a lot of information out there that you might miss out. आपको IG पे बहुत easily available हो जाएगी. आप Instagram channel, हमारे Instagram handle को भी follow कर सकते हो. And if you're watching this video for the very first time, then make sure you hit the like button, you subscribe to our YouTube channel, and yes, share it with all your friends. Till then, stay tuned to Supergrads.